गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नोट्स देख लीजिए. व्हाट इज प्यूबर्टी? द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू शो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की दूसरी डेफिनेशन थी द एज व्हेन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फास्ट इन ह्यूमन बीइंग. एडोलेसेंस फीचर्स आर अपीयर्ड या secondary changes are appear in human being is called puberty. What changes male and female occur during teenage? Teenage में क्या क्या changes होते हैं? Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in new part of the body such as armpit and the genital area between the thigh, which can also become darken in color. Thinner hair can also appear on leg and arm as well as on the face. The skin frequently become oily and we might begin to develop pimples. We begin to conscious and aware of both our on body and those other in new way. तो ये चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में जब एडोलेसेंस एज होती है. ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स. इन गर्ल्स वो बॉयज़ में चेंजेस थे, गर्ल्स में चेंजेस. ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज with darkening of skin of nipple at the tip of the breast. Also girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begin to crack. आवाज़ मोटी हो जाती है बॉयज़ की. Further the penis occasionally begin to become enlarged and erect either in daydream or at night. ये है बॉयज़ में चेंजेस. Why does the body show sexual maturity at this age? The need for specialized cell type in multicellular bodies to carry out this specialized function. The creation of germ cell to participate in sexual reproduction in another specialized function. And we have seen that plant develop special cell and tissue type to create them. Human begin also develop special tissue for this purpose. However, while the body of individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieve this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. सेक्सुअल मैच्योरिटी की क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस अपनी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए सेक्सुअल मैच्योरिटी ज़रूरी है. ह्यूमन डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट दैम. ह्यूमन बिगिन ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज. सो द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ दिस एज. डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक बार रीड कर देती हूँ. द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट द फॉलोइंग ऑर्गन: टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, seminal vesicle, prostate gland and penis. Testes are the oval shape organ which lie outside the abdominal cavity of a man. A man have two testes. Testes are the primary reproductive organ in a man. Two testes होती है man में और primary reproductive organ है ये. The function of testes is to make the male sex cell called sperm and also make the male sex hormone called testosterone. ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको. The testes of a man lie in a small muscular pouch called scrotum. Scrotum में होती है testes outside the abdominal cavity. कहाँ पर? Abdominal cavity में. The sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. Lower temperature की ज़रूरत होती है. Being outside the abdominal cavity, the temperature of scrotum about 3 degree Celsius, lower than the temperature inside the body. Body में जो temperature है उससे 3 degree Celsius कम होता है. The sperm formed in testes outcome go into a coiled tube called epididymis. coiled हुआ होता है जिसे epididymis कहते हैं. The sperm gets stored temporarily in epididymis. temporary यहाँ पर store होता है और एक long tube से the sperm are carried by a long tube called vas deferens which joined with the another tube called urethra come from urinary bladder. Along the path of vas deferens, the gland called seminal vesicle and prostate gland add their secretion to sperm so that the sperm are now in a liquid. This liquid plus the sperm is contained is called semen. मैंने आपको बता दिया था कि इसमें फ्लूइड इंक्लूड हो जाता है. The secretion of seminal vesicle and prostate gland provide nutrition to sperm. sperm को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कौन? ये seminal vesicle और prostate gland. Also make their further transport easier. Urethra form a common passage. Urethra common passage होता है sperm को और यूरिन को जाने के लिए. Urethra carries the sperm to an organ called penis. Urethra जिससे sperm को carry करता है वो penis है. Which open outside the body. The penis pass the sperm from the man's body into vagina is women's body during mating या copulation जिसको कहते हैं. For the purpose
For the purpose of reproduction in man, there is only one opening for the urine and sperm to pass out the body. ये structure है जो आपको draw करना है. Next है आपका female reproductive system. The human female reproductive system consists of following organ: ovaries, oviduct, which are called fallopian tube, uterus, vagina. Ovaries are the oval shape organ which are inside the abdominal cavity of a woman near the kidney. Kidney के abdominal cavity kidney के पास ही होती है. Women has two ovaries, दो ओवरी होती है. जैसे ये टेस्टिस भी 2 होती है तो ये भी 2 होती है. द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इन वीमेन. द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज मेक मैच्योर फीमेल इन सेक्स कॉल्ड ओवा और एग एंड ऑल्सो मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. ईच ओवरी इज कंपोज ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल एट प्यूबर्टी. दिस fall mature to form the ripe egg or ripe ova. The ovaries are the tube called oviduct. The ovum released by the ovary. Ovary से oviduct जिसे fallopian tube भी कहते हैं उसमें रिलीज हो जाती है. Ovary goes into the oviduct through the funnel shape opening. The fertilization of egg by sperm take place in. Fertilization कहाँ होता है? ओवी इसमें fallopian tube में. The two oviduct connect to the bag-like organ called uterus of their, and the growth and development of fertilization ovum into a baby take place in the uterus. The uterus is connected through a narrow opening called cervix to another tube, vagina, called vagina, which open to the outside of the body. Vagina receive the penis, Vagina receive the penis for putting sperm into the woman's body. Vagina is a tubular structure. Vagina is also called birth canal because it is a through this passage the baby is formed after the complexion of develop inside the uterus of the mother. In women the opening for passing out urine and vaginal opening are separate. बच्चों ये आपका पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम वो मेथड पढ़ेंगे कॉन्ट्रेसेप्शन की. प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, प्रेगनेंसी क्या होती है और उसे कैसे रोका जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.